Muslim religion, we need to understand that what are the challenges in the fundamental structure or existing structure of Muslim society. कौन से challenges है? Now this is what, which century? This is 19th century. So just suggest me some points which were like the challenges in 19th century. उस मुस्लिम सोसाइटी में वो challenges थे. पहली challenge क्या थी कि there was, you can say that there was a lack of rational outlook among Muslim community. ठीक है, rational outlook, use of reason. Okay, ये सबसे बड़ा limitation था. So read this: lack of rational outlook, lack of rational outlook. Okay, lack of rational outlook. It means use of reason was not promoted. Use of reason was not promoted. That lack of rational outlook, use of reason was not promoted. यूज ऑफ रीजन को कैसे प्रमोट कर पाओगे? हाउ विल यू एबल टू प्रमोट यूज ऑफ रीजन? बाय एजुकेशन. एजुकेशन देके ही तो प्रमोट कर पाओगे. तो एक तो चैलेंज ये है रेशनल आउटलुक वाला. अच्छा, इस रेशनल आउटलुक की वजह से, लैक ऑफ रेशनल आउटलुक की वजह से क्या होगा? रेड दिस. ओके, बिलीफ इन ओके कुरानिक practices, belief in Quranic practices, belief in Quranic practices. Okay, और ये बिलीफ भी गलत नहीं है, बट इसमें भी क्या है? बिलीफ इन कुरानिक प्रैक्टिसेस. एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेन जो हिंदू सोसाइटी वाली प्रॉब्लम थी वही प्रॉब्लम यहाँ पे है. प्रॉब्लम क्या है? मिस इंटरप्रिटेशन. क्योंकि हम कुरानिक टीचिंग्स को रॉन्ग नहीं कह सकते, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरानिक टीचिंग्स. तो प्रॉब्लम क्या थी कि द पीपल वर बिलीविंग द मिस इंटरप्रिटेशंस. The people were believing the misinterpretations. Clear? And when the people will believe in misinterpretations, so what will happen? Orthodoxy and superstitions will be promoted or not? Yes or not? Yes. Orthodoxy and superstitions will be promoted. Okay? जो customary laws and practices हैं, customary laws and practices हैं, okay, the people will follow as it is. As it is. ठीक है, customary laws and practices the people will follow as it is. So here, if anything is regressive, the people are not ready to reject it or discard it. If anything is regressive, the people are not ready to reject it. इसको लोग reject नहीं करना चाहते हैं. Got it? And due to this reason, many evils have become part of Islamic society. For example, one evil was पर्दा system. एक evil क्या है? पर्दा system. One evil is what? पर्दा system. Okay, this is one of the evil. Subordination of women, obviously. Okay, polygamy. It was also in Muslim society. Muslim society में भी polygamy. पर्दा system was there. Subordination of women. Okay, women were not given equal rights to education. The things like triple talaq, ये भी थी. Okay, पर्दा system, polygamy, subordination of women, the things like triple talaq. Okay, all these problems are present in Islamic society. Okay, and the people believe that these are pure teachings of Islam. Are they pure teachings of Islam? Yes or no? No. Okay, religion will teach about love for humanity. This is the basic teaching in the religion. Clear? So this is the problem. Okay, and the people, this will promote what? Religious bigotry, religious fanaticism, religious bigotry, and religious fanaticism. Religious fanaticism. This will promote religious bigotry and religious fanaticism. It means it will promote what? Radical outlook. It will make Islamic religion more radical religion. More radical religion. Orthodoxy will be a part of it. And the people believe that this is the original Islam. Okay?
The people believe that this is the original Islam. Okay. Suppose any family advocates to give education to its daughter. Okay. So the people will not consider good. There are chances that fatwas will be, okay, criticism, fatwa ये जारी होगा उस family के खिलाफ. So because they will say that you are compromising with the original teachings of Islam. Now this is questioned by Sir Syed Ahmad Khan. That what are you saying? What you consider is the original teachings of Islam. Basically, they are not the original teachings of Islam. Okay, we have to do what? Write critical commentary on Quran. We have to do reinterpretation of the teachings of Quran. अब हमें उसको reinterpret करने की जरूरत है, धर्म की नए सिरे से व्याख्या करने की जरूरत है. Now this is the time that we should do what? Reinterpretation of the teachings of Quran, and this will make our society more progressive. This will, okay, be able to end all these kind of discrimination. इससे सारे discrimination खत्म हो. This is the idea of Sir Syed Ahmad Khan. Now Sir Syed Ahmad Khan says that, Sir Syed Ahmad Khan says that we need to do what? Reinterpretation. Do reinterpretation of Islamic teachings. Reinterpretation of Islamic teachings. Reinterpretation of what is written in Quran. Okay, Quranic teachings. Reinterpretation. And this reinterpretation is should be done in a progressive manner. ये reinterpretation कैसा होना चाहिए? Progressive manner. Now what will happen? The fundamentalists, they will do what? Okay, they will declare fatwa against Sir Syed Ahmad Khan कि आप हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ मत करो. They need what? Status quo. याद आया धर्म सभा, ब्रह्म समाज, another organization धर्म सभा. They demanded status quo. So what revivalist organization will demand? Status quo. कोई इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं. And what Sir Syed Ahmad Khan is saying that if you do reinterpretation means what? Rational outlook. It means what? Use of reason. Reinterpretation is rational outlook, use of reason. And Sir Syed Ahmad Khan will do what? Will discard. He will do what? He will discard all the socio-religious evils in Muslim society. He will discard all the socio-religious evils. Parda system, he will discard. Polygamy, he will discard. Triple talaq, he will discard. He will discard everything. He will discard all the socio-religious evils that were present in the Muslim society. And he will say that, okay, we need to promote education. We need to promote education among the Muslim youth, okay, including women. We need to promote education among the Muslim youth, including women. And this education should be what? This education should be Western education. ये education क्या होना चाहिए? This education should be Western education. We need to promote education among the Muslim youth, among the women also, and this education should be Western education. Okay, got it? And why he is saying this? There is a reason behind this. First, I will discuss some facts, then I will enter into that debate. And for that purpose, write a fact. Okay, for that purpose, in 1875, for the purpose of promoting education among the Muslims, in Aligarh, Mohammedan Anglo-Oriental College and School and College, read this, Mohammedan Anglo-Oriental School and College was set up in Aligarh, Mohammedan Anglo-Oriental College or School was set up in Aligarh. Year was 1875. Clear? Year was 1875. And the same Mohammedan Anglo-Oriental School and College will later develop into Aligarh Muslim University, AMU. In which year? 1920. Got it? Central Hindu School and College in Banaras, later 1960, BH. वैसे ये क्या है? Mohammedan Anglo-Oriental School and College in Aligarh, and this is what? Aligarh Muslim University. Now, this college is what? This school or college is a symbol. 1875,
The school was set up, and this school or college was a symbol. This was a symbol of Muslim Renaissance. This was a symbol of Muslim Renaissance or Renaissance during Renaissance in Muslim society. This was a symbol of Renaissance. Why it was a symbol of Renaissance? Because here, what is the most important feature, key feature, that is promotion of education, scientific education, Western education, English education, Western art and sciences. Right? This Western art and sciences, English education, Western art and sciences, English education. All these are being promoted here, right? Scientific and technological knowledge, scientific and technological knowledge, education for women also. Okay, they will also get this Western education. Okay, and this education is capable of bringing social and cultural revival. Social and cultural revival. Because education will do what? Education will promote use of reason and rational thinking. Clear? Education will promote use of reason and rational thinking. और use of reason और rational thinking की वजह से the evils will be discarded by itself. बुराइयां तो अपने आप खत्म हो जाएंगी. Got it? The evils will be discarded by itself. बुराइयां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी. Okay? Evils will be discarded by itself. So this is the point here. So that become a symbol. Okay? This institution become a symbol of Renaissance in the Muslim society. It became a symbol for cultural and social revival in the Muslim society. The reforms will start. And what is the year? 1875. Now tell me, there is a time lag of how many years between Hindu society reform and Muslim society reform? Hindu society reform beginning is 1828 and Muslim society reform beginning is what? 1875. So there is a time lag of almost how many years? 50 years. 50 years. Now I am going to discuss with you one very important concept जिसको ध्यान से समझना है and definitely UPSC will someday ask question from this concept. अब वो सर सैयद अहमद खान से क्वेश्चन पूछेंगे तो ये नहीं पूछेंगे discuss about Aligarh movement. No, they will correlate two topics looking at the current trend, so that I am going to discuss with you the very important concept. Okay, now I am going to discuss with you that, okay, Sir Syed Ahmad Khan, about his personality, some of the important details and okay concepts about Sir Syed Ahmad Khan. ठीक है, पहली चीज क्या है? Read this. Okay, Sir Syed Ahmad Khan, right? Served DIC, served DIC, EIC में नौकरी की थी Sir Syed Ahmad Khan, right? From 1828 itself, he was serving East India Company. From 1828 itself, he was serving East India Company, right? Okay. He also served as a judge in some cases. Okay. He also served as a judge in some cases. He also became a member of Legislative Assembly representing minority groups. Member of Legislative Assembly. Okay. And British government had also awarded him with the title of knighthood. Knighthood. Okay. In 1888, British government had also awarded him with the title of knighthood in 1888. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में नहीं पूछे जाए. मैंने क्यों बताया? क्योंकि सर सैयद अहमद खान वाज सर्विंग कंपनी, कंपनी की नौकरी कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी कर रहे थे. और नौकरी क्यों कर रहे थे? बिकॉज ही वॉज एन एजुकेटेड पर्सन, दैट्स वाई ही वॉज सर्विंग ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है. एंड नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट ही सीज? देखो प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम इज, वन इज एंशिएंट इंडिया, देन वी सी medieval India, and then we see 1757 onwards, here is what? Modern India. यहाँ पे क्या है? Modern India. ध्यान से समझना, एक एक बात जो आज बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको कम्युनलिज्म को समझना बड़ा आसान हो. This is modern India. Now what is the thing here? In medieval India, which class was the ruling class? बताओ.
रूलिंग क्लास कौन सा क्लास था? मुस्लिम. Muslims were the ruling class. Who were the important nobility class? Muslims. Important nobility class were the Muslims, right? Muslims. Hindu rulers भी थे, but there was Muslim rule in India. There was Muslim rule in India. Muslims were important nobility class. Muslims were important ruling class. Administration में भी किसका दबदबा था? Was the most dominant when we talk about the administration? Muslims. Okay. So Muslim were also elite class and administrative class. Muslims were also elite class and administrative class. ये बात आपको समझ में आई? Others are also there. I am not universalizing the concept, but still Muslims were dominating. When British rule will establish in India, now you all know the story. तो यहाँ पे क्या होगा? Okay, Mughal rule, or you can say that Muslim nobility class will be replaced by which class? British elite class. elite class होगा कि नहीं बताओ? यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में जहां पे पहले मुस्लिम्स ओके प्रोमिनेंट रोल में थे, नाउ द रोल इज चेंज्ड. नाउ हु इज इन प्रोमिनेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन? Muslims are in prominent role, sorry, British are in prominent role in administrations. So can we say that the British class replaced Muslims as an administrative class? Yes or no? Can we say this? एक simple understanding है. So write this point that we see here that in modern India, write this, in modern India, the British elite class replaced Muslims class, the class of Muslims, British elite class replaced the class of Muslims in administration. In administration, ठीक है ना? एडमिनिस्ट्रेशन में इनको रिप्लेस कर दिया. They replaced the class of Muslims in administration. Got it? Muslims की क्लास को रिप्लेस कर दिया. अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? ओके, वन एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास रिप्लेस्ड बाय अनदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास. तो इससे क्या बढ़ेगी? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट. Obviously, unemployment among Muslims will increase. Okay, so write this. Unemployment among Muslims will increase. Unemployment among Muslims will increase. Okay, unemployment among Muslims will increase. Now the new rule is British rule. And due to their outlook, Muslims are not adopting Western education. Western education के खिलाफ तो फतवा जारी कर दे रहा है. So they are not taking Western education. And if you are not taking Western education, okay, will you get job opportunities in British period? Yes or no? नहीं. अगर सर सैयद अहमद खान को अंग्रेजी नहीं आती तो वो काहे का जज बनते? कंपनी की सर्विस में कैसे रहते? So he was knowing that if I am knowing English, if I am familiar with the Western knowledge, so I am getting job and services in British India, British Indian company, administration. ये बात आपको ध्यान से समझनी है. तो write this point that due to their traditional outlook of neglecting, due to their traditional outlook of neglecting Western knowledge, English, Western knowledge, science, due to their traditional outlook of neglecting English knowledge, okay, Western sciences, the Muslims were lagging behind. Muslims were lagging behind. And we can say that they were not fit for new administrative services. Muslims were lagging behind. They were not fit for new administrative services. They were not fit for new administrative services. ठीक है. If you will not upgrade your skill, what will happen? अब आप फारसी बोलोगे तो थोड़ी ना ईस्ट इंडिया कंपनी आपको अपनी सर्विस में ले लेगी. नहीं. ठीक है, फारसी के साथ साथ इंग्लिश भी सीखो. So you will not upgrade the skills, what will happen? Clear? So they were not upgrading their skills due to their traditional outlook. So that's why they were lagging behind. ठीक है.
They were lagging behind. And the one more thing, okay, एक दूसरी चीज है, the revivalist movements are doing what? They are causing more harm to the Muslim society because they want to bring back the pure form of Islam. Okay, so right, next point, that revivalist movements, और ये पहले है कि नहीं बताओ, 1830s 60s 1850s पढ़ा ना हमने. So right, this revivalist movements were causing another harm to the Muslim society. Revivalist movements were causing another harm to the Muslim society. Another harm to the Muslim society because another harm to the Muslim society because they were trying to bring back, because they were trying to the bring back the bring back Islam in its original form, you can say pure form or earliest form. Okay, तो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इस्लाम को वो रिवाइव करना चाह रहे थे, ये प्रॉब्लम था. तो दे आर डूइंग अनदर हार्म. और सर सैयद अहमद खान वाज एनालाइजिंग एवरीथिंग, सब सब कुछ एनालाइज कर रहे थे. ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट कब है? 1875 में. ठीक है, और दूसरी चीज सर सैयद अहमद खान क्या देख रहे हैं? ठीक है, देखो, आई एम अगेन ड्रॉ दिस स्केच ऑल्सो इन योर नोट्स, तो आप रिलेट कर पाओगे. ब्रह्म समाज एंड राइट हियर 1875 अलीगढ़ मूवमेंट. गॉट इट? 1828 में क्या है? ब्रह्म समाज. दिस इज अलीगढ़ मूवमेंट. ये फेज है. नाउ देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट इवेंट एंड दैट इवेंट इज राइट हियर, रिवोल्ट ऑफ 1857. रिवोल्ट ऑफ 1857 जो मैं बता रहा हूं वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. रिवोल्ट ऑफ 1857. ब्रह्म समाज इज व्हाट? It is an indication that reforms in Hindu society has started. Reforms in Hindu society has started. Aligarh movement is the symbol that from here reforms in Muslim society will start. So there is a gap of almost 50 years. This is a gap or time lag of almost 50 years. ये पूरा टाइम लैग कितना है? 50 years का. कॉम्युनलिज्म, पार्टीशन, नेशनल मूवमेंट कभी इससे जुड़ा हुआ ऐसे आए तो बी रेडी टू राइट. ठीक है, ऐसा ऐसे जिसमें आप जीएस के पेपर्स का रिफ्लेक्शन, मेरी बात समझिए ना, डाल सकते हो, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, विल गिव यू वेरी गुड मार्क्स. ठीक है, एंड आई विल स्टार्ट ऐसे डिस्कशन फ्रॉम दिस संडे, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा. आई विल चूज फर्स्ट दोज टॉपिक्स वेयर यू आर गोइंग टू यूज द नॉलेज ऑफ जनरल स्टडीज. ठीक है ना, वहीं से स्टार्ट करना है. तो अब देखो क्या होगा. एक और मेंटालिटी होती है, वो मेंटालिटी क्या होती है? जैसे इफ ब्रिटिश विल रिप्लेस मुस्लिम क्लास एज द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, तो उनके अंदर एक टेंडेंसी होगी ब्रिटिश के अंदर, और वो टेंडेंसी क्या होगी? सप्रेसिंग मुस्लिम्स. नहीं तो दोबारा सर उठाओगे. मेरी बात ध्यान से समझना. अगर अपने गांव के आप जमींदार हो और मैं जाके आपके गांव में जमींदार बन जाऊं जबरदस्ती, तो मेरी कोशिश क्या होगी? पुराने जमींदार को दबा के रखना, सप्रेस करना, या उसको गांव से बाहर भगा देना. मेरी बात समझ गया ना? तो ये टेंडेंसी भी तो काम करेगी, दैट इफ ब्रिटिश कंपनी हैज रिप्लेस्ड मुस्लिम्स एज द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, सो देयर इज अ जनरल टेंडेंसी ऑफ सेपरेशन ऑफ मुस्लिम्स. जानबूझ के उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में नहीं लेना, जिससे कि वो क्या हो जाए? गरीब रहे, वीक रहे. जब वो वीकर रहेंगे, सो दे विल नॉट रेज देयर हैंड्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. क्योंकि तात्कालिक नुकसान किसका हुआ था? मुस्लिम्स का ही तो हुआ था ना. मुस्लिम रूल वाज रिप्लेस्ड बाय द ब्रिटिश रूल, तो नुकसान तो उन्हीं को हुआ था. ओके, सो इन दिस phase what we see, that write this point, that the British write this, the company government, the company government, okay, had a general tendency, had a general tendency of separation of, company government had a general tendency of separation of Muslims in India. Separation of Muslims in India एक जनरल टेंडेंसी भी थी, जनरल टेंडेंसी ऑफ सेपरेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया.
because the company administration has replaced Mughal administration, okay, or the Muslim administration. So it has a general tendency of separation of Muslims in India. General tendency of separation of Muslims in India because company has replaced Muslim rule. So it has a general tendency of separation of Muslims in India. Now in this phase, if education will be promoted among Hindus and Hindus will get English education, scientific education, so what will happen? They have upgraded their skills. Now in companies administration, who will get more opportunities, Hindus or Muslims? Muslims को नुकसान हो रहा है कि they are not upgrading their skills, plus the government is having okay a kind of tendency of separation towards the Muslims. तो उनको नुकसान हो रहा है. मुस्लिम हिंदू को क्या फायदा है? Read this point 1. Okay, हिंदू रिफॉर्म से क्या होगा? Read this skill upgradation. Skill upgradation. It means majority of Hindus will be fit to be part of administrative services. Administrative services, subordinate administrative services. Superior offices were always occupied by the British. So majority of the Hindus were fit for the job. Were fit for the job. ठीक है? So their participation is increasing, and about Muslims participation in jobs and employment, this is decrease. ये decrease हो रहा है और ये सब हो रहा है. And who is analyzing each and everything? Sir Syed Ahmad Khan. सब देख. Now what happens here? Revolt of 1847. यहाँ पे होता है रिवोल्ट ऑफ 1847. आई एम डिस्कसिंग विद यू जिस्ट ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट बुक्स. ठीक है ना, बुक आपको पढ़ना नहीं है, वो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ. जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही स्टैब्लिश्ड हिस्टोरियंस का ओपिनियन है, मेरा नहीं. ठीक है, मुझे तो हिस्ट्री आती ही नहीं, मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, तो ये अच्छी बात है, याद रखना है इसको. नाउ रिवोल्ट ऑफ 1847 क्या होता है यहाँ देखो. वी विल डिस्कस दिस चैप्टर लेटर, बट इतना तो पता है that this revolt was lastly okay not successful in realizing its objective. And what was the objective of this revolt? इस revolt का objective क्या था, कोई बता सकता है आप में से? अब दूसरे लोग भी बताया करो, ठीक है. क्या था objective? विपिन को छोड़ के कौन बताएगा? Yes, exactly, to restore Mughal power in India. Okay, so write this. Objective was to restore Mughal power in India. To restore Mughal power in India. And Mughal power is Hindu rule or Muslim rule? Muslim rule. ऑब्जेक्टिव तो यही था. अंग्रेज इसीलिए सप्रेस करके रखते थे कि दोबारा सर उठाने की कोशिश करेंगे. द सेम हैपेंड हियर. ऑब्जेक्टिव यही है, टू रिस्टोर मुगल पावर इन इंडिया. नाउ ब्रिटिश वर सक्सेसफुल इन सप्रेसिंग दिस रिवोल्ट. वी ऑल नो दिस. रेड दिस. ब्रिटिश successfully suppressed this revolt. British were successful in suppressing this revolt. British were successful in suppressing this revolt. इस revolt को क्या किया? Suppress कर दिया. And after this, British will do what? Okay, British बहुत चालाक है. Divide and rule policy कैसे यूज करते हैं देखो. This revolt was okay. Right, this Hindu-Muslim unity. Hindu-Muslim unity was a remarkable feature of this revolt. Most unique. Hindu-Muslim unity was the most unique and remarkable feature of this revolt. Hindu-Muslim unity was the most unique and remarkable feature of this revolt. बताओ, हिंदू सिपाही पहुंच गए लाल किला और बहादुर शाह जफर को कहा कि हम आपको रूलर बनाना चाहते हैं. ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं? क्लियर? So this revolt, what we see that Hindu-Muslim unity was one of the most remarkable feature. And British fear from the unity of Indians. Unity से उनको डर लगता है. Because unity will give an idea or sense of oneness. And this is nationalism. और जब नेशनलिज्म आ जाएगा तो कॉलोनियलिज्म उसके सामने टिक नहीं पाएगा. सो ब्रिटिश न्यू दिस दैट ये क्या था, ये तो बहुत खतरनाक चीज है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी. सो आफ्टर दिस रिवोल्ट, read this, British will use their policy of divide and rule. To break this Hindu Muslim unity, British will use their policy of divide and rule. To break this unity, British will use this policy of divide and rule.
and how they are going to use this policy of divide and rule. This is also very interesting. ठीक है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो क्या है? राइट, सेलेक्टिव सेलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, selective administrative action, selective administrative action. This is the keyword. And what is selective administrative action? This is also very interesting. देखो, selective administrative action. Suppose we all have participated in a revolt. मान लो हम सबने revolt में participate किया. We all are united for a cause. Then, after this revolt fails, the British will suppress and they will start punishing those people who were responsible for this revolt. And British will consider Muslims. They will say that Muslim conspiracy. This revolt is due to which conspiracy? Muslim conspiracy. Suppose half of us are Hindus and half of us are Muslims, but all have participated in a revolt. Example hai. Now British policy is saying who is largely responsible? Muslims are responsible. Now suppose 20 to 30 students out of you are Muslims. British police authorities will come, they will arrest you, they will beat you, they will torture you, considering you are responsible for revolt of 1857. ठीक है, हिंदूज को भी पनिश किया, बट एक मैसेज दिया सोसाइटी को कि हमें ये लग रहा है कि इस रिवोल्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मुस्लिम. तो लार्जर एग्जीक्यूशन किसका होगा? मुस्लिम्स का. मान लो हम सब एक ही कॉलोनी में रहते हैं, ब्रिटिश पुलिस आई और मुस्लिम यूथ को उठा के ले गई, बेटा तुम थे रिवोल्ट में, चलो आज तुम्हारी पिटाई होगी. ट्रक में भर के ले जा रहा है. और सपोज देयर आर अदर यूथ हु आर द हिंदू यूथ. उन्होंने क्या सोचा, अच्छा हुआ इनको हमारे बारे में पता नहीं चला, सीसीटीवी कैमरा तो थे नहीं उस समय. अब बाकी लोग ये सोच के खुश हो रहे हैं कि गए तो हम भी थे लेकिन इनको हमारे बारे में पता नहीं चला, अच्छा हुआ हम बच गए. यही तो वो चाहते थे. जब आप ये सोच के खुश हो गए कि अच्छा हुआ हम बच गए, हमारे बारे में पता नहीं चला, तो जिनको वो अरेस्ट करके ले गए वो क्या कहेंगे? साहब हम नहीं थे, केवल हम नहीं थे, वो भी थे. यही कहेंगे ना. दूसरा स्टेप उनका क्या कहना होगा? आगे से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे. अंग्रेज समझाए कि देख लिए ना, थे वो भी, आए तुम्हारे सपोर्ट में. ठीक है. तो ये है पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. whenever any government does this, right, if any selective administrative action is being taken, it means that this is the policy of divide and rule. ये भी हमने सीख लिया किससे? अंग्रेजों से. बहुत कुछ सीखा है. अंग्रेज अगर 100-200 साल और रूल करते ना तो और भी बहुत कुछ सिखा के जाते. ठीक है. ओके, so this is selective administrative action. So read this. Okay, muslims were considered muslims were considered largely responsible for Muslims were considered largely responsible for revolt of 1857. I have used their word, this word largely. Controversy नहीं करना है. हिंदूज को भी पनिश किया था, ठीक है, बट यहाँ एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं. Muslims were considered largely responsible for the revolt of 1857. Clear? So read this. The British, ये तो लिख लिया ना. और selective administrative action. Right? Muslim youths were arrested. Charges were framed against them. Charges were framed against them. Charges were framed against them. ठीक है. ठीक है. largely वर्ड को हाईलाइट कर लेना. हिंदूज का भी एग्जीक्यूशन हुआ था, ठीक है, बट यहाँ पे एक मैसेज देना था गवर्नमेंट को. ठीक है. गवर्नमेंट मैसेज आसानी से दे देती है. ठीक है. तो गवर्नमेंट ने वो मैसेज दे दिया सोसाइटी को कि भाई हम किसको रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं? मुस्लिम्स को. अब आप बताओ, आफ्टर 1857 जो थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी थी जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट में, वो भी खत्म हो जाएगी कि नहीं? विल ब्रिटिश गिव यू द अपॉर्चुनिटी इन जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट? नो. ओके, सो read this. This event had again adversely affected this event. What did it adversely affected? The participation of Muslims in jobs and employment. Adversely affected the participation of Muslims in jobs and employment. Job opportunities adversely affected the job opportunities for Muslims. Crime, मेरी बात समझ गए? This is one part.
Got it? Now we are coming to the next part. Again, who is observing each and everything? Sir Syed Ahmad Khan. Now he realizes कि अब कुछ नहीं बोला, ठीक है, अगर मैंने, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है. Now what will happen? Now Sir Syed Ahmad Khan, read this. Sir Syed Ahmad Khan, okay, will write a book in year 1850. And books are what? Books are the reflections of our thought. Okay, और बुक का ईयर क्या है? 1859. तो ये ध्यान में रखना है. सैयद अहमद खान wrote a book in the year 1859. Okay, 1859. और इस बुक का नाम क्या था? The name of this book was, right? Important fact for prelims, highlight कर लेना इसको. असबाब ए बगावत ए हिंद. This is the name of the book. असबाब ए बगावत ए हिंद. This is the name of the book. असबाब ए बगावत ए. असबाब ए बगावत ए हिंद. This is the name of the book. Asbab means story. Okay. Asbab also means reason. Or Bagawat means revolt. And Bagawat-e-Hind, it is indicating what? Revolt of 1857. So what is the meaning of this book? Asbab-e-Bagawat-e-Hind, that is story of revolt of 1857, reason of revolt of 1857. Story of reason of revolt of 1857. Syed Ahmad Khan wrote this book. First he wrote this book in Urdu, and later it was translated into English. First it was written in Urdu, and later it was translated into English. असबाब बगावत है, पर पहले उर्दू में लिखा और फिर इसका ट्रांसलेशन किस में हो गया? इंग्लिश में. फर्स्ट इन उर्दू, देन इन इंग्लिश. नाउ व्हाट वी सी हियर, Urdu and English. In this book, what is the message, political message, that Sir Syed Ahmad Khan wants to give to the British? The political message is, Muslims, the revolt of 1857 is not a revolt, or it is not as a result of conspiracy of Muslims. ठीक है? Read this. The revolt of 1857, revolt of 1857 was not as a result of Muslim conspiracy. It was not as a result of Muslim conspiracy. ये मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी के कारण नहीं. It was not as a result of Muslim conspiracy. And the another message that is imbibed in the book is, Muslims are and will be always loyal. Muslims are and Muslims will be, right? The second message, Muslims are or Muslims will be always loyal. Muslims are or Muslims will be always loyal for the presence of British rule in India. दूसरा मैसेज दिया, Muslims are and Muslims will be always loyal for the presence of British rule in India. So it's company rule in India. Presence of company rule, because यहाँ पे क्या था? हाँ, वहाँ British rule. Presence of British rule in India. वो हमेशा किसके लिए लॉयल रहेंगे? ब्रिटिश रूल के लिए. Because in 1858 what has happened? Company has been replaced by crown. And now Syed Ahmad Khan is saying that we will always be loyal to the crown or crown rule. हम हमेशा किसके लिए लॉयल रहेंगे? क्राउन रूल के लिए. 1857 was not a result of Muslim conspiracy. क्यों कहा सैयद अहमद खान ने ऐसा? अब आप समझ गया ना? ये सैयद अहमद खान नहीं लिख रहा है, परिस्थितियां लिखवा रही हैं उनसे. और परिस्थितियों को पैदा किसने किया है? कंपनी ने, अपने दिमाग से. सेलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, मुस्लिम्स आर कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल. मुस्लिम सोसाइटी को जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं, कुछ भी नहीं. एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास कौन है? कंपनी. एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास कौन है? ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो आपको अगर कुछ भी मांगना होगा, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो नौकरी हो, वो किससे मांगोगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से. और आप अंग्रेजी सरकार के खिलाफ रह के अंग्रेजी सरकार से नौकरी थोड़ी ना ले सकते. तो आपको पहले ये साबित करना पड़ेगा कि 1857 का रिजल्ट मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी का रिजल्ट नहीं था, रिवोल्ट
और दूसरी बात बतानी पड़ेगी कि वी विल बी लॉयल टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दो बातें इन्होंने बताई। एंड पैरेलली ही विल स्टार्ट वर्किंग ऑन व्हाट, he will start working on promoting this idea among the Muslim groups कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, एजुकेट करो, ओके अपने ऑर्थोडॉक्स और सुपरस्टिशियस टीचिंग से बाहर निकलो, नहीं तो और पिछड़ जाओगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी नहीं, समय बदल रहा है, अब मुगल रूल दोबारा एस्टैब्लिश नहीं होने वाला है, ओके। So in this modern administrative system, you need education. And on another side, what he will try to do? He will try to give a message to the British government that Muslims are what? Loyal to the presence of British rule. Because अगर Muslims educated हो जाएंगे तो वो जॉब कहाँ करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन किसका है? ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को आपको रिलेट करना है। So after this, Sir Syed Ahmad Khan does what? Okay, he started promoting this idea. At the same time, right, he also started making efforts for bringing socio-religious reforms. Okay, he also started making efforts for bringing socio-religious reforms among Muslims, plus promotion of education among Muslims. इसके लिए कोशिश इन्होंने करनी शुरू कर दी। ओके, अलीगढ़ मूवमेंट 1875 में हुआ, लेकिन इसकी तैयारी तो काफी पहले से चल रही थी ना, राइट? सो ही डिड दिस, started promoting socio-religious reform among the Muslims, and he also started promoting education among the Muslims. मुस्लिम कम्युनिटी के सामने promotion of education, ये भी चीजें शुरू हो जाती हैं। Got it? Very simple idea. Now what we see? The out, अब इसके बाद देखो, the outcome can be seen in which year? 1875, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। क्या ये बिना ब्रिटिश सपोर्ट के बन सकता था कॉलेज? मान्यता कौन देगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट। बट इसके पहले एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो मैं बता दूं, ब्रिटिश गवर्नमेंट इज वेरी स्मार्ट, ठीक है? जैसे आप बार बार कहते रहो हम आपके लिए लॉयल हैं, लॉयल हैं, लॉयल हैं, तो लॉयल्टी टेस्ट भी करवाती थी कंपनी, जैसे आजकल लोग रेडियो पर करवा लेते हैं लॉयल्टी टेस्ट, ठीक है? तो कंपनी ने वही काम किसको दिया? डब्ल्यू, रेड दिस, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर फिल्म्स, पीवाईक्यू, सो रेड दिस, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, यहाँ पे लिख लो डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, ठीक है? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिल्म्स। पूरा नाम है विलियम विल्सन हंटर। डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर मीन्स व्हाट? विलियम विल्सन हंटर, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, विलियम वेदसल विल्सन हंटर, ठीक है? क्या हो रहा है विलियम विल्सन हंटर का? ओके, read this. He wrote a book in 1871. He wrote a book in 1871, and the name of this book was The Indian Musalmans or Musallamins. The Indian Musalmans. The Indian Musalmans. He wrote a book in 1871, and the book was Indian Musalmans. और उस समय ये असिस्टेंट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट, असिस्टेंट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर था बीरभूम डिस्ट्रिक्ट बंगाल में, ठीक है? और देखो ये भी बंगाल में ही है, पार्टीशन ऑफ बंगाल भी कहाँ हो रहा है? बंगाल में। सो ही वाज पोस्टेड एज एन असिस्टेंट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, ही वाज पोस्टेड एज असिस्टेंट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर इन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट बंगाल, बीरभूम इन बंगाल। ही वाज पोस्टेड एज एन असिस्टेंट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, बीरभूम में था। तो गवर्नमेंट आस्क्ड हिम, गवर्नमेंट ने इससे पूछा था कि भाई ग्राउंड रियलिटी बताओ, थोड़ा स्टडी करो, अब स्टडी करवर के फिर हमें ये बताओ, तुम्हारा काम ये बताना है कि वेदर द इंडियन मुस्लिम्स आर स्टिल हैविंग द सेम मेंटालिटी ऑफ डूइंग जिहाद अगेंस्ट द क्वीन। क्या अभी भी उनकी मेंटालिटी है? इसका मतलब पहले ये मेंटालिटी थी। इससे ये पता चलता है, जिहाद का मतलब ये भी है कि हिंदुस्तान का मुसलमान जब अंग्रेजी सरकार से नाराज हुआ तो उस नाराजगी को दिखाने के लिए और विरोध करने के लिए उसने जिहाद वर्ड का यूज किया। तो जिहाद के कई सेंस हैं, मेरी बात समझ गया ना? सो ही वाज गिवन द टास्क, सो राइट दिस, दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लो, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज आस्क्ड डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर टू एग्जामिन has asked W. W. Hunter to examine that, okay, examine that, okay,
whether Indian Muslims are still having, whether the Indian Muslims are still having, whether they are still having the same sense of jihad or rebel, same sense of jihad or rebel against the queen, whether they are having the same sense of jihad or rebel against the queen. क्या क्वीन के खिलाफ उनके दिमाग में अभी भी जहर है, वो जिहाद है, वो रिबल है? ही वॉज आस्क्ड टू एग्जामिन करने को कहा। तब इसने अपनी बुक लिखी, कहा कि बुक रिपोर्ट सबमिट करके इसने क्या किया, बुक ही लिख दिया। ही जस्ट कलेक्टेड ऑल हिज आइडियाज इन द फॉर्म ऑफ दिस बुक डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर 1871। और इस बुक में वो क्या कह रहा है, राइट दिस 1857 कह रहा है, इट वाज, यस, इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ मुस्लिम्स, ये मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी थी। ही सेज दैट यस, it was a conspiracy of Muslims. Then he says that in 1871, in 1871, in 1871, right, majority of the Indian Muslim class, majority of Indian Muslim class has rejected the idea of doing a revolt against the British government. 1871, majority of the Indian Muslim class, majority of the Indian Muslim class has rejected the idea, has rejected the idea of doing revolt against British government. Majority of the Muslims class in India has rejected the idea of doing revolt against the British government. Right, one more point. It means now they are the loyal supporters for the presence of British rule in India. इसने रिपोर्ट फाइनल लगा दी that now Muslims are the loyal supporters for the presence of British rule in India. Now Muslims are the loyal supporters for the presence of British rule in India. डब्ल्यू हंटर की रिपोर्ट मायने रखती है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। इसने क्या कहा कि अब मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है, तो खतरा नहीं है तो अब क्या करो, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बिल्डअप करने में मदद करो, एजुकेट करो और उनको एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनाओ, उनको एम्पावर करो, और उनको एम्पावर करके इन फ्यूचर किसको कमजोर करने के लिए यूज करो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर से डिवाइड एंड रूल। मेरी बात समझ गया ना, ये है ब्रिटिश पॉलिसी, ठीक है। तो देखो कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, दिस इज कॉर्पोरेट कॉन्स्पिरेसी, गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी, ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी। देखो अगर आप किसी के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हो और आपकी साजिश का पता उसको पहले से है कि आप क्या कर रहे हो, तो वो साजिश किस काम की साजिश, ठीक है। If you are planning a conspiracy against someone and he already knows that you are conspiring, ठीक है, तो बड़ा खिलाड़ी कौन हुआ, ठीक है। वो आपको खेलने दे रहा है कि ठीक है बेटा, ठीक है, जो कर रहे हो करो, ठीक है, हमें तो बस देखना है कहाँ तक जा सकते हो, ठीक है। तो कंपनी जो थी ना, कंपनी की मेंटालिटी यही थी, ओके। दे वर प्लेइंग विद द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल। उनको हिंदुस्तान बने, एक नेशन बने, पावरफुल बने, गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, कभी ऐसा इंटेंशन नहीं। देयर बेसिक पर्पस वाज हम इंडिया में कैसे बने रहे और हम इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कैसे कर सके, ये उनका मेन टारगेट था। नाउ दिस विल हैपन। अब देखो ईयर्स 1871 में रिपोर्ट बुक आई डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की, एंड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एस्टैब्लिशमेंट इन विच ईयर, 1875। Aligarh movement started which year? AMU comes which year? 1920. It means from this period onwards, we see that the British will start giving some patronization to the Muslim class. मेरी बात समझ गया ना? और इस मुस्लिम क्लास, ठीक है, के साथ अगला इनका स्ट्रेटजी क्या होगा, तो देखो what they will do. Again I am drawing a sketch, but I will discuss in detail later in the Indian nation movement. देखो what will happen. 1905 to 1908. Yes, 1907-08 we see what? Swadeshi movement in India.
स्वदेशी मूवमेंट इन इंडिया। और फिर स्वदेशी मूवमेंट में क्या है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उनको फिर से दिख गई हिंदू मुस्लिम यूनिटी, उनको बहुत खतरा लगता है हिंदू मुस्लिम यूनिटी, दैट इज नॉट गुड फॉर देम, so they will try to break the unity. So what will happen, this concept I will discuss later. 1906 all India Muslim League was formed. Okay, this was a party, okay, of Muslims only. ये केवल किसकी पार्टी थी, मुस्लिम्स की। ओके, पार्टी ऑफ मुस्लिम्स ओनली। और इधर जो 1885 में हमने पार्टी बनाई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट वाज ऑल क्लास पार्टी, इट वाज all class party, the all class party. And now what will be the target of Muslim League? Muslim League will say that we are the party of Muslims and INC is the party of Hindu. मतलब इनका टारगेट ही था कि उसको क्या प्रूव कर दो, हिंदू पार्टी। मेरी बात समझ गया ना? वाई INSC वॉज सेटअप एज एन ऑक्सिलरी प्लेटफॉर्म, बताया था ना क्लास में, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, लास्ट क्लास में 1887। ये रीजन था एग्जैक्टली कि अलग प्लेटफॉर्म, नहीं तो क्या करेंगे, ठीक है। ये तो खैर बाद में आई, बट ये खतरा हो सकता था। INC was knowing this from the very beginning. So this is 1885 all class party, and 1906 is what, party of, okay, Muslims. And Muslim party, right, this Muslim League will try to label INC as a Hindu party. और इस पार्टी को बनवाया किसने था, ब्रिटिश। फंड किसने दिए, ब्रिटिश। डोनेशंस किसने दिए, ब्रिटिश। And then again, I will discuss later in Indian National Movement 1909 and SES for Muslims issue in 1909. SES for the Muslims, separate electorate system for the Muslims. This is also known as teeth of communal dragon in India. Teeth of communal dragon in India. Teeth of communal dragon in India. So these events I will relate later. बट जब वो पढ़ाऊंगा तो ये पीछे वाला पर्सपेक्टिव याद रखना। गॉट इट, ओके, समझ में? टीथ ऑफ कॉमनल ड्रैगन इन इंडिया, हाँ। 1909, this is SES for the Muslims, separate electorate system for the Muslims, and this is also known as teeth of communal dragon in India. इसको बाद में डिस्कस करूंगा, when I will come to the national movement I will discuss these points. So you will have to do correlate करना होगा, because whenever the question will be asked, you are going to address a main theme in the GS Maths question. पूरा का पूरा एक कंप्लीट थीम होगा, तो जब आप समझोगे you can easily write the answer, ठीक है। जो भी मॉड्यूल पढ़ रहे हो, जो भी मॉड्यूल सेल्फ स्टडी कर रहे हो, whatever you are doing for your self study part, select one module, select one chapter, develop good command over that chapter. खत्म नहीं करना है जल्दीबाजी में. If you will do that, the syllabus will never come to an end. You will finish the book, but you will gain nothing. ठीक है, एक एक चैप्टर को टारगेट करना है. Read it, discuss it, read PYQ, try to write the answers, discuss the chapter with your friends, ठीक है, and then enter into the second chapter, then enter into the third chapter. ये होता है रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच. गॉट इट, ओके. इस रेस में बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि 21 ईयर्स में ही IAS बनना है, 22 ईयर्स में बन जाओ, 23 में बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. 21 की बजाय 23 में बनोगे ना तो ज्यादा बेहतर काम करोगे, ठीक है. नहीं तो रील बनाने में सारा टाइम आपका निकल जाएगा, ठीक है. ज्यादातर लोगों का निकल जाता है, IAS स्टॉप करते हैं, फिर केवल और केवल रील में नजर आते हैं, ठीक है. चलिए, now I hope you have got this idea. Now I will discuss one more point about Sir Syed Ahmad Khan. Right, Sir Syed Ahmad Khan. It means Sir Syed Ahmad Khan gradually did what? Read this. He started advocating. He started advocating for protecting the rights of Muslim classes in India. Muslim classes in India. Okay, advocating for protecting the rights of Muslim classes in India. Okay, so he was just trying to, okay, promote the Muslim interests in India. Muslim interests in India.
ठीक है. हाउ टू सेफगार्ड मुस्लिम्स इन इंटरेस्ट इन इंडिया, this he was doing. How to safeguard Muslim interest in India, this he was doing. Can we say him communalist? Yes or no? कितने लोगों को लग रहा है yes या no? He was trying to safeguard Muslim interests in India. On this basis, can we say him communalist? Yes or no? Write in chat box. क्या होगा भाई? बाकी लोग केवल स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही तो नहीं कर रहे हो, वीडियो नहीं ऑन कर रहे हो. ओके, गिव आंसर yes or no. देखो, on this basis we cannot say anyone communalist. It is not bad to protect the rights of a particular class, a particular group. ठीक है, ये बुरा नहीं है. Today also we do this. होता है कि नहीं? आज के टाइम में भी तो ऐसा होता है that suppose you are a leader of your community. आप जाट हो और आप जाट कम्युनिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हो. If you are a Hindu fighting to protect the rights of Hindu community, if you are a Muslim doing some work to promote the welfare of Muslims in India, ये गलत नहीं है. On this basis you cannot be called as communalist. इस बेसिस पे कम्युनिस्ट कह नहीं सकते. ये तो बहुत अच्छी बात है कि हर कम्युनिटी का आदमी अगर अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करे तो पूरा देश हमारा आगे बढ़ेगा. इसमें कौन सी बुरी बात है? कुछ गलत नहीं है. ओके, वी मस्ट हैव अ सेंस और द फीलिंग दैट वी आर द इंडियंस. वी ऑल आर हैविंग ओके कॉमन इंटरेस्ट. बट स्टिल, क्या आप अपने घर के लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम नहीं करते हो? करते हो ना. तो घर से बना क्या? समाज. ओके, कम्युनिटी. तो ये गलत नहीं है. बट देखो प्रॉब्लम क्या हो. Sir Syed Ahmad Khan was knowing this fact very well that okay, this is a colonial rule, and he was knowing this fact very well. इसके पहले एक एग्जाम्पल था, और वो एग्जाम्पल क्या था? अमेरिका का. अमेरिका was a colony of Britain. We all know this now. America was a colony of Britain, and America got freedom from British okay colonialism. America got freedom from this British colonialism. America was a colony of Britain. America got freedom from the British colonialism. अमेरिका को तो फ्रीडम मिल गया था. तो जब अमेरिका को फ्रीडम मिला तो अमेरिका बिकेम व्हाट? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री. डेमोक्रेटिक कंट्री बना. तो सर सैयद अहमद खान वाज नोइंग दिस that this is a colonial rule and one day this colonial rule will come to an end. एक दिन colonial rule खत्म होगा. And when this colonial rule will come to an end, what will happen? This might be possible that democracy will come in India. Democracy आएगा. And democracy works on which principle? One vote, okay, one person, one vote principle. One person, one vote. इसी principle पे तो काम करता है. Now what Sir Syed Ahmad Khan demanded? Sir Syed Ahmad Khan started demanding these rights from the Muslims, that from the British government, that okay, we need okay one class, one vote. One class, one vote. One class, one vote. Is it proper and adequate demand? No, it's improper and inadequate demand. ये डिमांड थी सर सैयद अहमद खान की. It was improper and inadequate demand. अब इसका मतलब कैसे समझोगे? वन क्लास वन वोट. फॉर एग्जाम्पल, हिंदू क्लास इज इक्वल टू वन वोट. मुस्लिम क्लास विल हैव वन वोट. आप बताओ, हु इज इन मेजॉरिटी नंबर्स? हिंदूज. हु इज इन माइनॉरिटी नंबर? मुस्लिम. So this is against this principle or belief of one person, one vote. You are asking for one class, one vote. क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि फ्रांस वाला टॉपिक रिपीट हो रहा है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में यही तो था. वन क्लास, वन वोट. नोबिलिटी क्लास को वन वोट, प्रीस्टली क्लास को वन वोट. ओके, सो this is what? Proper and adequate demand. This is what? Improper and adequate demand. So if you will raise this demand, what will happen? On this basis you are a communalist. यहाँ पे आप communalist हो गए. ये चार्ज आप पे लग सकता है. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस डिमांड. और यहीं पे गलती की सर सैयद अहमद खान. इन्होंने एक डिमांड की जिसका नाम हो गया इम्प्रॉपर एंड इनएडिक्वेट डिमांड.
Later, what will happen? Muslim League will do what? Muslim League will demand for SES for Muslims. SES for the Muslims. Separate electorate system for the Muslims. क्या था separate electorate system? जैसे मान लो कि ये इंडिया है और पूरे इंडिया में in context of all India, Muslims are minority. Muslims क्या है? Minority. Suppose these are some selected pockets or territories where Muslims are in majority. मान लेते हैं यहाँ पे Muslims क्या है? Muslims are in majority. In the context of all India, Muslims are in minority. So what is the demand of Muslim League? Ki the areas where Muslims are in majority, these selected pockets should be treated as separate electorate. इनको एक विशेष दर्जा मिलेगा. They are different from the regular electorates. They are what? Separate electorates. In context of India, Muslim class is minority class. But in some selected pockets, जो आगे चल के क्या बन गया? पाकिस्तान बन गया. वहां पे मुस्लिम्स क्या थे? दे आर इन, मुस्लिम्स वहां पे क्या है? दे आर इन मेजोरिटी. वहां पे वो मेजोरिटी में. तो दे आर आस्किंग दैट दीज सेलेक्टेड पॉकेट्स वेयर मुस्लिम क्लास आर इन मेजोरिटी, दे शुड बी मेड सेपरेट इलेक्टरेट्स एंड देयर मुस्लिम्स विल गेट प्रिविलेजेस. और वो प्रिविलेजेस क्या है? ओके, in electoral rolls there will be the name of Muslim voters only, there will be Muslim candidates only. Okay, तो बताओ इस तरह की जो डिमांड है, इज इट प्रॉपर एंड एक्यूरेट एडिक्वेट डिमांड? नो, बिकॉज यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में है बट यहाँ पे माइनॉरिटी में अदर माइनॉरिटीज भी तो है भाई. ठीक है, यहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी भी तो हो सकता है. सो दिस डिमांड इज व्हाट? इम्प्रॉपर एंड इनएडिक्वेट डिमांड. तो ये इम्प्रॉपर एंड इनएडिक्वेट डिमांड जो बाद में आया सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम के रूप में, ठीक है, एग्जैक्टली ये सर सैयद अहमद खान की डिमांड नहीं थी. बट हु स्टार्टेड such kind of demand? Improper and inadequate demand for the Muslim class in India? Sir Syed Ahmad Khan. He started this. One class, one vote. It was not given. इसका कभी practical implementation नहीं हुआ. This was the demand of Sir Syed Ahmad Khan only. But what we say, that the same mentality is reflected in the demands of Muslim League also. When Muslim League demand for separate electorate system, it is again what? A kind of improper and inadequate demand for the Muslims. Inadequate demand for the Muslim. He demanded what? One class, one vote. This was not realized. ये नहीं हुआ. But here Muslim League demand SES for the Muslims. This was later realized. ये आगे पूरा हुआ. So सर सैयद अहमद खान ने क्या किया? वो जमीन तैयार कर दी जिसमें एक माइनॉरिटी कम्युनिटी अपने लिए क्या मांग करेगी? इम्प्रॉपर एंड इनएडिक्वेट डिमांड. इससे दूसरी माइनॉरिटीज को भी क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा कि हमें भी यही डिमांड करनी चाहिए. दलित्स विल आल्सो डिमांड, अदर माइनॉरिटीज विल आल्सो डिमांड. इससे क्या होगा? इंडियन सोसाइटी कई टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा. और जब इंडियन सोसाइटी कई टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, सो हु विल गेट द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ द सिस्टम? इसका फायदा किसको मिलेगा?